Shailesh Pawar, and in today's session we are going to talk more about constructors and the related things. So I'm going to start sharing my screen now. So we had started making use of NetBeans IDE to write and run our programs. So I'm going to go to File menu. I'll click on New Project. I'll select Java. From right hand side, we will have to select Java application. Click on Next. Then we are going to come up with the name of our project. So suppose we are going to provide the name to the project as Con Demo. I don't want main class to be created, so I'm not going to select this option, and we'll just click on Finish. So now inside source packages, or say for default package, we will just right click, we'll go to New, and we are going to come up with the class here. Say I'm going to provide the class name as say ABC. So it's going to be a very simple class. Inside this class, I'm going to come up one data member, say private int x. This is the data member that I want inside this class ABC. And then I would like two methods to be present here. There would be one method set data, which is going to accept one parameter, and then हम लोग उस parameter की value अपने data member x में assign करेंगे. We'll just assign the value of that parameter into our data member x, and then I'm going to come up with one more method here, and in this I will just show value of, I'll just say value of x is, we are going to show the value of x on screen. So we have very simple class available here with only one data member x, and then इसमें दो methods हम लोगों ने set करके रखे हैं. Set data, which is going to accept one parameter, और उस parameter की value हम लोग x में assign करेंगे, and then there is another method show data, which is going to display the parameters value on screen. So ये एक class बन गई, and then I'm going to come up with another class here. This class is going to contain main method for us. Just click on Finish. यहाँ पे आ जाते हैं. And inside this public class main, we are going to come up with main method. ये main method मैंने यहाँ पे रखा. Now, if we want to call set data method, what do we have to do here? We will have to create object of ABC class first. हम लोग सबसे पहले ABC class का object बनाएंगे, and then we are going to call set data method here. Suppose मैंने value set कर दिया as 25, and then we are going to call show data method, जहाँ पे it is expected कि जो x की value है that should get displayed on screen. So we have written this program now. If I would run this program, as expected, the output is going to come up. Let's see what output comes up. Value of x is 25. Obviously, यही answer आना था, because we had called set data method, and using set data method, we had called the parameter say 25, or say value 25 into the parameter of set data method, which got copied into num, and from num it was assigned to the data member x. Show data method उस x की value को वहाँ पे display कर रहा था. So this part we have already seen. So now the important part that we will have to understand here is, in last program, in last lecture itself, we had seen that whenever we create object of class, who gets called? Constructor gets called. जब भी हम लोग class का object बनाते हैं, constructor call होता है. तो at this point in program, we have created object of class ABC here. But have we written any constructor in class ABC?
तो आंसर इज नो, वी हैव नॉट रिटन एनी कंस्ट्रक्टर इन क्लास एबीसी. सो व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट दैट वी हैड लर्न, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था क्लास लेक्चर में, या जिस स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो एग्जीक्यूट होते हुए भी सारी चीजें देखी थी, कि जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तो पॉइंट यहाँ पे ये है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस क्लास में तो कंस्ट्रक्टर ही अवेलेबल नहीं है. तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है दैट अगर इस एबीसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो क्या कॉल होगा, इज दिस प्रोग्राम गोइंग टू रन. तो अब भी हम लोगों ने देखा, इस प्रोग्राम का आउटपुट अब भी हम लोगों ने देखा था, तो प्रोग्राम तो रन हो रहा है. तो फिर ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था दैट व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड, isn't that statement working in this program also? दिख तो नहीं रहा कि यहाँ पे वो स्टेटमेंट वर्क हो रहा है, क्योंकि एबीसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं. तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि whenever we create object of class constructor gets called? See, the point here is that we will have to understand one very important concept, that when programmer doesn't specify any constructor in class, the Java compiler itself will add a non-parameterized and empty constructor in the class. This point is very important. Very important point it is. So if being a developer we have not specified any constructor in our class, then अपना जो जावा कंपाइलर है वो खुद एक नॉन पैरामीटराइज्ड एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को अपने क्लास के अंदर ऐड कर देता है. तो नॉन पैरामीटराइज्ड मींस ऑब्वियसली उसे कोई पैरामीटर्स पास नहीं होंगे, एम्प्टी मींस उसके अंदर कोई कोड भी लिखा हुआ नहीं होगा. एंड सच अ नॉन पैरामीटराइज्ड एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर which has been added to your class by the compiler itself is known as default constructor. So the point that whenever we create object of the class constructor gets called is 100% true in case of Java. Constructor is going to get called. Okay, so what happens if there is a constructor created by us? Obviously the constructor created by us is going to get called, and if there is no constructor put by us into the class, the Java compiler itself is going to add a non-parameterized empty constructor to our class, and that constructor is known as default constructor. So in case of class ABC, यहाँ पे जब हम लोगों ने माय मेन क्लास के अंदर मेन मेथड में एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एट दिस पॉइंट इन टाइम एबीसी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था. व्हाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गॉट कॉल्ड? बिकॉज हम लोगों ने खुद कोई कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नहीं है. हाँ, अगर हम लोगों ने खुद कोई कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ होता तो बात यहाँ पे अलग थी, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता. बट एज वी हैव नॉट रिटन इवन अ सिंगल कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, द कंपाइलर इटसेल्फ एडेड a non-parameterized empty constructor in the class, and that constructor which gets added by compiler when no other constructor is present in the class is known as default constructor. So अगर in short अगर अपने पास कोई भी ऐसा क्लास है जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट वो ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिससे कंपाइलर खुद ऐड करेगा. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अब इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट को लेके. सपोज आई एम गोइंग टू राइट वन कंस्ट्रक्टर इन एबीसी क्लास हियर. सो कंस्ट्रक्टर हैज टू हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास. आंसर इज यस. कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेके आ रहा हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट कोड समथिंग लाइक दिस. मैं ऐसे कोड लिख रहा हूँ यहाँ. So this time. So have a look at this constructor now. Obviously it's a parameterized constructor. The only thing which is different here is यहाँ पे मेरे डेटा मेंबर का नाम x है
और मैंने कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर पास किया है उसका नाम भी x है। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू x लिखा है, we as a programmer know that the right hand side x is the parameter that we have passed to our constructor and the left hand side x is the name of the data member of our class. Okay, अब हम लोग माय मेन में आ जाते हैं। ऑब्वियसली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन अब यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे एरर क्यों? Because whenever we will create object of class, constructor is going to get called. So how many constructors are there in class ABC? There is only one, and that constructor is asking for an integer parameter. So have you provided that integer parameter in your code? The answer is no. और इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो सपोज मैं ये इंटीजर पैरामीटर असाइन कर देता हूँ, सेट डेटा मेथड ये नहीं है वहां पे, तो वो वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा मुझे। नाउ क्वेश्चन कम्स अप, अब क्या होगा? What will be the output here? See, we are passing 35 as a parameter to ABC class constructor. तो ये 35 जाएगा इस x पे, इस x से ये 35 असाइन होने वाला है डेटा मेंबर x में, and then when we are going to call show data method, the value of x should get displayed on screen. So now question comes up, what do you think? What value is going to be displayed here? अब यहाँ पे क्या लगता है तुम लोगों को, क्या आउटपुट आएगा या क्या आउटपुट आना चाहिए? सो प्लीज कीप योर आंसर्स रेडी. दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, है ना, फ्रॉम फ्रेशर. ऑब्वियसली यस, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं, है ना. तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. वी आर गोइंग टू रन दिस फाइल. Look at the output. Now obviously there must be some people here who must have been feeling surprised that sir ये कैसे हो गया, ये x की वैल्यू 0 कैसे आ गई. Now let's understand why the data member x value is being displayed as 0 here. So when we created the object and we passed the parameter, obviously the parameterized constructor got called. We had passed the parameter as 35, parameter value as 35. That value got copied into this parameter x, and now we as a programmer know that the right hand side x is the parameter here of the constructor and the left hand side x is the data member here of the class. But what Java compiler is considering that both of these x are nothing but parameter x only. ये जो दोनों x यहाँ पे दिख रहे हैं ये पैरामीटर x है, ऐसे जावा कंपाइलर कंसीडर कर रहा है. तो when you are doing this, it's like you are assigning value of parameter x into parameter x. You are not assigning value of parameter x into data member x. तुम लोग पैरामीटर x की वैल्यू पैरामीटर x में असाइन करो. And when this is happening, obviously the data member x is not getting assigned any value. और हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर्स में ही देखा है कि जब हम लोग अपने डेटा मेंबर्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा मेंबर वी हैव, उसकी वैल्यू सेट हो जाती है. ठीक है. तो अब अगर ये इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या वैल्यू जाएगी? ऑब्वियसली 0. तो व्हेन विल बी कॉलिंग शो डेटा मेथड, ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सिस का आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. That's why we are getting the output as 0. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर what should we do to let the Java compiler understand that the left hand side x here is the data member x and the right hand side x here is the parameter of the constructor. So how can we do this? In order to do this, we can always make use of this keyword. हम लोग this keyword का use कर सकते हैं यहाँ पे. So what have I written here is I have written this dot x equal to x. Now the moment you are going to make use of the keyword this here, always remember this keyword is used to refer to the current object. This keyword is used to refer to the current object because of which the method is being called. So as we know, in this case the constructor was being called because of creation of this ABC object. Yes. So this is referring to that ABC object which is being created here. So when you say this dot x, it means you are talking about data member x of the ABC class object which is being created via this constructor. And when you are saying only x, it means you are talking about parameter x here. Okay. So use of this keyword is very, very important. Now
if you run the program once again, you will see now the value of x is being displayed as 35 here. So this point is very, very important. It is very, very important point that the concept of this keyword is used to refer to the current object which is being displayed on screen, है ना? जो current object अपने screen पे display हो रहा है उसे रेफर करने के लिए हम लोग अपने this keyword का use करते हैं. Okay, so let me, okay. Yes, so the concept of this keyword and the concept of default constructor, both of these are very, very important concepts that we will have to understand. Okay, now let's start with the next concept that we will have to we have to see here. Let's go to ABC class here, and now inside this ABC class, I'm going to come up with the method set data. Again, I can keep the name of the parameter as x only, or what we can do is we can simply write it as num. So we want value of num to be assigned to x. That's what we want. Now, in this particular program, what we will do is I am going to declare, or say, these are the changes that I have made here. Now let's come back to my main. Now we don't have any constructor or say parameterized constructor, so I'm not going to assign any value here, send any value. Suppose we are going to come up with two objects, ABC obj1 equal to new ABC, ABC obj2 equal to new ABC, and then I'm going to call set data method via 45, via obj1, and then I'm going to call show data method via obj2. We are going to call set data method via obj1 and show data method via obj2. Now question comes up, what output would be displayed here? यहाँ पे क्या output आएगा? You are calling set data method via obj1. So this value 45 is going to be assigned to the data member of obj1 object. ठीक है? और अब हम लोग शो डेटा को कॉल कर रहे हैं किसके थ्रू? obj2 के थ्रू. तो obj2 के थ्रू हम लोग शो डेटा को कॉल करेंगे, तो ये जो x डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट होगी वो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? obj2 की वैल्यू प्रिंट होगी. कल ही हम लोगों ने देखा था वाया डायग्राम, मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि whenever we create multiple objects of class, separate copies of data members are assigned to each object. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था that EMP1 and EMP2 were the two objects created for employee class. So EMP1's ID and name was stored differently, was stored at different place, and EMP2's ID and name was stored at different place. So same concept is going to be applied almost in every program here. In this particular example also, for obj1, x is obj1's x and obj2's x are different from each other. Those are being saved as two different objects, obj1 and obj2. So their data members are also different. Okay, so I'm setting value for obj1's data member. तो क्या value set की है मैंने? 45. और मैं show data को कॉल कर रहा हूँ तो किसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ? obj2 के थ्रू. तो क्या वैल्यू यहाँ पे सेट करके यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? obj2 के डेटा मेंबर में तो कोई वैल्यू नहीं गई थी, और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट 0 आना चाहिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. एज यू कैन सी देयर, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आउटपुट 0 ही है. वो तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही था कि ऐसा ही होगा. नाउ लेट्स डू वन चेंज. आई एम गोइंग टू डिक्लेयर the data member x with the keyword static num. So now let's see how class behaves in case of static data members. अब ये देख लेते हैं कि एक class static data member के टाइम पे कैसे behave करता है. ठीक है? Now let's go and execute our program once again, and let's check whether any changes are happening in the code. And the moment you are going to run this program, as you people should be able to see on your screen
value of x is being displayed as 45. Now this point is very, very important here. When I had not declared x data member as static, for obj2 value of x was being displayed as 0. बट जब मैंने x डेटा मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर करके रखा है, obj2 के लिए वैल्यू 45 डिस्प्ले हो रही है, बट 45 वाज द वैल्यू जो हम लोगों ने obj1 के x में सेट की थी. अब मतलब इन अ वे ऐसा हो रहा है कि obj1 के x की वैल्यू obj2 के x में दिखाई दे रही है. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है. तो नाउ लेट मी शो दिस टू यू वाया डायग्राम. तो मैं एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू तुम लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. Let's understand what is exactly happening in this case. So at this point we had created ABC object. Now for that ABC object, in order to refer to that ABC object, we had created a reference, say obj1. So via obj1 we were referring to this ABC object. I'll show this like this. And then we had created one more ABC object here. And to refer to that ABC object, we had created another reference, say obj2. So I'm going to show this via arrow, something like this. Okay, and initially when x was not declared as static, for x, for ABC, first ABC object, x value was 45, whereas for obj2, as I had not put any value for x data member of obj2, initial value was 0. So this was the case previously, earlier. But the moment I declared x as static, now what we need to understand here is, this time separate copies of x data member are not going to be generated for each object of class ABC. Rather, there would be only a single copy of x that would be generated, and we know which value was put for it. Obviously 45 was the value which was specified for it. So in a way we can say that x of x data member of ABC is this ABC object and this ABC object. In memory, no two copies were created for it. Rather, a single copy of x data member was created, which was being shared by both of these ABC objects. तो x इस डेटा मेंबर की दो कॉपीज नहीं बनाई गई थी, यहाँ पे x डेटा मेंबर की एक ही कॉपी बनी थी और उस एक ही कॉपी को दोनों ABC ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे थे. एंड दैट्स व्हाई अब ये मैटर नहीं करता कि तुम लोग शो डेटा मेथड को किस रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहे हो, obj1 के थ्रू कॉल कर रहे हो या obj2 के थ्रू कॉल कर रहे हो, किसी के भी थ्रू कॉल करो, यू आर गोइंग टू सी द सेम वैल्यू. तो इसीलिए obj1 के थ्रू भले सेट डेटा को कॉल करके मैंने 45 ये वैल्यू डाली थी, अब अगर मैं obj2 के थ्रू शो डेटा को कॉल करता हूं तो वही 45 वैल्यू मुझे दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ABC, इन दो ABC ऑब्जेक्ट्स के लिए x की दो सेपरेट कॉपीज क्रिएट नहीं हुई. और क्यों नहीं हुई? क्योंकि x को स्टैटिक डिक्लेयर किया गया. अगर x नॉन स्टैटिक होता तो दोनों के x अलग हो जाते हैं, x की कॉपीज अलग होती. अब x स्टैटिक है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए x की कॉपी सेम है. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर रेफरिंग टू द सेम कॉपी ऑफ x, एंड दिस इज द पॉइंट विद static data members. In case of static data members, separate copies are not going to be generated for each object. Rather, only one copy of the data member will be created, and that single copy will be shared among all the objects of your class. So ये point बहुत बहुत important है यहाँ पे. इसीलिए चलो अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं हम लोग.
इसीलिए अगर मैं इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ कर दूं, suppose I am going to call set data method via obj2 now, and then I am going to call show data method via obj1 now. तो now we will see वो जो कॉमन x था, उस x में पहले 45 की वैल्यू गई, अब उसी x में फिर 55 की वैल्यू गई। तो अब ये मैटर नहीं करता कि obj1 उस वैल्यू को देख रहा है या obj2 उस वैल्यू को देख रहा है, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी 55, that should be displayed on screen. Run 5, as you can see there, value of x is 55 is being displayed on screen. So this simply proves my point here, that whenever we talk about static data member, separate copies for each object are not going to get generated. Only one copy of static data member will be created, and that copy will be shared among all the objects of the class. So for this session, we'll stop at this point only. I just hope that you people have understood this concept. So please keep that memory diagram in your mind, heap memory diagram in your mind, how both the objects were referring to the same copy of x when x was being declared as static, and when x was not declared as static, two separate copies of x were created in the memory. So I'm going to stop sharing my screen now. Thank you.